Now let's move to the next property, that is hardness. So some materials can be pressed easily, for example cotton. So this is the picture of a cotton. So when you try holding the cotton between your finger and a thumb and then you press it, you are easily able to press the cotton. Why? Because the cotton is soft material. Its property is that it is a very soft material. That is why हम उसको इतनी easily press कर सकते हैं. And उसके अलावा some materials are hard to press. कई materials हम नहीं press कर सकते. For example, brick. So this is the picture of a brick. So अगर आप ईंट लेते हैं, if you take brick in your hand and then you try to press it, you are not able to press it. Why? Because it has the property of hardness in it. So hard materials, हम इसी के बारे में, ये हमारा टॉपिक है, that hardness. अगर मटीरियल हमारे पास है and it is very hard, and why a material is hard? Hardness आती क्यों है? Why a material is hard? Because it has low or no molecular space between them. Alright? So that is why this reason makes those objects really hard. Not only brick, you take the example of duster, you take the example of chalk, you take the example of wood. So they have very less or no molecular space between them, and for this reason those materials are quite hard in nature, and that only defines the hardness of an object. इसके अलावा materials that can be compressed or scratched easily are called soft. हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉटन का, और यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्लोथ जो बहुत ही हल्का होता है. कॉटन का एग्जाम्पल, ऑब्वियसली कॉटन से तो कपड़े बनते ही हैं. सो यू आर एबल टू स्क्रैच इट वेरी इजीली एंड कंप्रेस इट वेरी इजीली. सो दैट मेक्स द सब्सटेंस वेरी सॉफ्ट. ये हम बता चुके हैं आपको, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. एंड लास्टली, मटीरियल्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. सो ऐसे मटीरियल्स हमने एग्जाम्पल देख लिया है. ब्रिक के अलावा हार्ड मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? जो हार्ड होते हैं वो होते हैं ब्रिक, तो हम पढ़ ही रहे हैं. उसके अलावा टेक द एग्जांपल ऑफ चॉक और द एग्जांपल ऑफ कार्डबोर्ड, राइट? सो दीज आर नॉट वेरी इजी टू कंप्रेस या प्रेस. अगर आप ब्रेक करने की बात कर रहे हैं तो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हार्डनेस. हम इसकी बात कर रहे हैं कि इफ यू आर पुटिंग दोज ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन योर थंब एंड फिंगर एंड देन यू आर ट्राइंग टू प्रेस इट, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो इजीली प्रेस होता है या नहीं? दैट ओनली दिस फैक्टर इज डिफाइनिंग द हार्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट.